Good morning students. Now today we will study the next formation, which is formation of image when the extended source of light is bigger than opaque body. Extended source of light is bigger than opaque body. We have already studied the formation when the extended source of light is smaller than opaque body. About point source we all have studied. Now today extended source of light is bigger than opaque body PQ. ठीक, extended source of light is SS1 and opaque body is named as PQ. Okay, then we will have a screen XY. XY is a screen. Okay, it is a screen, and X1 Y1 is a shifted screen. That means afterwards we have shifted the screen to check the formations, okay, of images. So directly we will see how the formation works here. From S, two source of light is considered from S. Okay, one is traveling from S to P and fall on the screen at B. We are seeing that one is traveling from S and will passes through P and fall on the screen at B. Another again from S starts and will fall at Q and will passes through Q and fall at D. Will passes through Q and fall at D on the screen. Okay, so they both is obeying rectilinear propagation of light. Okay, from S to P and fall at B. From S again passes through Q and fall at D in the screen XY. In the screen XY. Okay, another source S1, here also two light will originate. One will follow the path from S1 to P and fall at A. From S1 passes through P and fall at A in the screen XY, and another from S1 passes through Q and fall at the screen at point C. Fall in the screen at point C. So from S1 to Q at C and from S1 to P at A. Okay, here also two path of light we have considered. Okay, so now what we are observing, that because of opaque body the region of P, B, C, Q is umbra. Okay, region of P, B, C and Q is umbra region. Okay, is umbra region. Umbra we all know, darkened region. Okay, P, B, C, Q is umbra region, and the region of PAB is penumbra. Okay, PAB is penumbra. PAB is penumbra region. Okay, and QCD is also a penumbra region. Okay, QCD is also a penumbra region. So again what we are observing, that the region of penumbra is 2 and the region of umbra is 1. And one more thing we have observed, that now in this case the penumbra region is larger as compared to umbra. Okay, in this case penumbra is larger. Penumbra is larger than umbra. Okay, the umbra is 1 and penumbra 2. Okay, that means two region of penumbra will form and one region of umbra will form, and penumbra is larger as compared to umbra. Okay, till now it is very much clear. Okay, this is umbra region, these two are penumbra region. Umbra is smaller as compared to penumbras. Okay, now what we are seeing, when we are shifted the screen from XY to X1 Y1, what we are observing, that penumbra region is increases very much. Okay, penumbra is increased to a very huge source. Okay, see here from P to this point to this point. Okay, and again, so this is the region will become the penumbra region. Okay, this is the region will become the penumbra region. So we are seeing that penumbra is becoming much larger, and here again see here, this is the region of penumbra. So penumbra is very much larger region. And what about umbra?
umbra is smaller and it is slowly what happen, only this much of the region is umbra is seen here, and next slowly it is not visible. Okay, it is fainted off, it is not visible. Okay, what happened, umbra is gone. Why? Because now it is decreasing and decreases becomes point source, and afterwards it is not visible also. Okay, so this is the formation of image when extended source of light SS1 is greater than opaque body PQ. क्या है, हमने देखा कि S से दो पाथ हमने लिए, एक S से P से होते हुए B पे गिर रहा है स्क्रीन पे, एक S से Q से होते हुए स्क्रीन पे D पे गिर रहा। दूसरा सोर्स हमने क्या लिया, S1 से P से होते हुए स्क्रीन पे A पे गिर रहा, और S1 से होते हुए Q से होते हुए स्क्रीन पे C पे गिर रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पेनम्बरा का रीजन क्या है, बड़ा है एज कंपेयर टू अम्ब्रा का रीजन। अम्ब्रा क्या है, यहाँ से क्या धीरे धीरे बड़े से धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। बड़े से धीरे धीरे अम्ब्रा छोटा होता चला जा रहा है। उसी जगह पेनम्बरा क्या है, छोटे से बड़ा होता चला जा रहा है। ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, पेनम्बरा के दो रीज़न, अम्ब्रा का एक रीज़न। अम्ब्रा का रीज़न पेनम्बरा से छोटा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा। अब अगर हम स्क्रीन को और पीछे शिफ्ट करते हैं तो हम देख रहे हैं कि अम्ब्रा क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज होते होते क्या एकदम ख़त्म हो गया है। अब दिख ही नहीं रहा है, इतना छोटा हो चुका है कि वो अब नहीं दिख रहा है, नॉट विजिबल। उसी जगह पेनम्बरा का रीज़न क्या है, वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है, बहुत बड़ा हो गया। दोनों ही केस में क्या है, वो बहुत बड़ा हो गया। और बड़ा होने के कारण क्या है, ये जो पेनम्बरा का जो पार्शियल डार्कनेस का रीज़न है, इट बिकम्स लिटिल वेरी फेंट। ओके, इट बिकम्स वेरी फेंट एज इफ वी विल नॉट एबल टू सी द शैडो ऑफ एनी सोर्सेस। ओके, मतलब क्या है कि पेनम्बरा का रीज़न हो तो गया बहुत बड़ा, लेकिन बड़ा होने के कारण क्या हो गया, वो बहुत फेंट हो गया, बहुत क्या है, बहुत हल्का हो गया। उतने हल्के होने के कारण क्या है, उसने अपनी शैडो, उसकी शैडो बनेगी ही नहीं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है। शैडो बनने के लिए थोड़ा मोर लाइट की ज़रूरत होती है, और ये क्या है, कम लाइट के कारण क्या हो गया, ये फेंट हो गया, बहुत ज़्यादा हल्का हो गया। इतना हल्का हो गया कि अब इसमें कोई भी शैडो नहीं बन सकती। ओके, सो इट विल बिकम लार्जर बट फेंट। ओके, एंड अम्ब्रा इज डिक्रीजेस slowly and then it will not seen. Okay, now when we will shift the screen towards the opaque body, जब हम opaque body PQ की तरफ हम स्क्रीन को बढ़ाएंगे, तब हम क्या देख रहे हैं, at that time we are seeing that umbra region is a little bit more increasing. Okay, and penumbra region is decreasing. Okay, at that time what we are observing that umbra region is increasing. अगर हम स्क्रीन XY को PQ सोर्स की तरफ ले जाएं तो क्या है, यहाँ से अगर हम यहाँ पे इतना यहाँ पे हम ले जाएं तो यहाँ पे क्या है, अम्ब्रा का रीजन क्या है, ज़्यादा हो रहा है, और पेनम्बरा का रीजन क्या है, छोटा हो रहा है। पेनम्बरा का रीजन छोटा हो रहा है और अम्ब्रा का रीजन बढ़ रहा है। वाई, एट दिस पॉइंट व्हेन द स्क्रीन इज हेयर, what happens, umbra region will increase and penumbra region will decrease. Okay, so this is the formation of image when the extended source of light is greater than opaque body. Okay, so this is the formation. Now we will study about the next formation, which is about the bird and all. So now we will study about the bird, which is given in the topic bird flying high in the sky not cast their shadow. Why the bird which is flying high in the sky, we don't see their shadow on the earth. Okay, you all also have seen many of the birds, they are you have seen in your surrounding many of the birds flying high in the sky, but you will not able to see their shadow on your earth. Okay, why? The reason is why, because the diameter of the sun is much larger as compared to the bird. Here I have made bird in the little bit of the spaces. Anyhow I able to draw a little bit of the bird. You will not able to see. यहाँ पे bird समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि बहुत छोटी जगह थी। किसी भी तरह anyhow I have tried to draw. तो क्या ये bird है? Okay, this is the bird. Okay, and the diameter of the bird as compared the size of the bird as compared to the diameter of the sun is very small. Okay, is very small. So that is why what happened, we will not able to see the shadow. Now see why, because see,
from sun, one light, we have taken two path, okay, from here and from here, two rays from here and two rays from here of the sun we have taken to make you understand what happened. From here, when the light will go and passes through the head of the bird and will fall on the earth, and from here again passes through the back of the bird and fall on the earth. Now here again, from here two source originate. Here one passes through the head and will fall on the earth, and another one passes through the almost from the leg of the bird and will fall on the earth here. Okay, so this is the bird, which is umbra. Why? Because bird is a body which do not allow the light to pass through them. Okay, so diameter of the sun is much larger as compared to the size of the bird. So what we are seeing? We are seeing that because of umbra, only this much of the region where no light will fall, that means a umbra region formed. Okay, only this much of the region where umbra region formed, whereas penumbra is much larger. Penumbra is much larger as compared to the little bit small point size of the umbra. That means umbra is only of point size and penumbra is a very large size, but of faint one. Faint penumbra will form, very faint. Okay, so because of very faint, what happens? The shadow of the image will not able to reach to the earth. Okay, the shadow will only disappears in the sky only. It will not able to fall on the earth. Okay, because it will faint and slowly what happens? It will start disappearing. Okay, so it will not fall on the earth. That is the reason why bird do not cast their shadow on the earth. क्या बताया मैंने कि सन जो है बहुत बड़ा होता है, उसका डायमीटर क्या है, एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है. यहाँ से देखने में आपको छोटा लगता है, लेकिन एक्चुअल में सन का साइज क्या है, बहुत बड़ा होता है. इट इज़ अ वेरी ह्यूज डायमीटर. और बर्ड क्या है, छोटी छोटी होती हैं, उनकी साइज़ बहुत छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू द सन डायमीटर. तो सन से जो रोशनी निकलती है उसमें से हमने कोई दो पाथ को लिया, एक इसके सर से होते हुए अर्थ में जा रही है, एक पीछे से होते हुए उसके बॉडी से होते हुए अर्थ में, एक यहाँ से इसके हेड से होते हुए क्या है अर्थ में, एक यहाँ से इसके लेग से होते हुए अर्थ पे जा रही है. तो हम देख रहे हैं कि अम्ब्रा बहुत ही एक पॉइंट सोर्स का अम्ब्रा बन पा रहा है, और पेनम्ब्रा क्या है, बहुत बड़ा बन रहा है, लेकिन क्या है, फेंट है. फेंट होने के कारण क्या होता है, इसमें इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो क्या है, वो अर्थ तक को शैडो को ले जाए. वो क्या है, ऊपर ही स्काई में ही क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा. धीरे धीरे धूमिल होते होते क्या हो जाएगा, वो एकदम डिसअपियर हो जाता है. इसी वजह से उसकी हमें शैडो अर्थ में नहीं दिखाई पड़ती है. दैट इज ओनली द सेम रीज़न वाई एरोप्लेन नॉट कास्ट देयर शैडो ऑन द अर्थ. एरोप्लेन भी हवा में उड़ते हैं, उन्हें भी हमें उनकी भी शैडो हम नहीं देख पाते, ओनली बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न. बिकॉज डायमीटर ऑफ द सन इज लार्जर एंड व्हाट हैपेंस, इट डू नॉट एबल टू कास्ट देयर शैडो ऑन द अर्थ. ओके, so the fluorescent tube light is also considered shadowless. The fluorescent tube light is also considered shadowless. Why? Because of the same reason, penumbra is so faint that it do not cast their eclipse on the earth. Okay, so this is the reason of the formation of images. Okay, now we have to study about eclipse. Okay, so eclipse we will study in our next video. Okay, here only formation of the images I have explained you. So hopefully you are reading from the book. Read it from the book, the whole chapter. It is very important. Okay, and if any problem you can ask me in the comment box and also in your WhatsApp group. Thank you.